हेलो नमस्ते पैरीपाना पायलागू, क्या हाल है आपके? रोहन कारियापा मेरा नाम है एंड राइट ऑफ द बैक लेट मी स्टार्ट ऑफ दिस वीडियो बाय अपोलोजाइजिंग बिकॉज वी रिसीव क्लोज टू 3500 एंट्रीज इन अ मैटर ऑफ 36 आवर्स. सो इफ यू डू अ लिटिल बिट ऑफ मैथ्स यू विल रियलाइज कि भाई इस वीडियो में जितनी एंट्रीज को मैं फीचर करने वाला हूँ दैट इज नॉट इवन 1% ऑफ द टोटल एंट्रीज दैट आई हैव रिसीव्ड. A very difficult job to do. So in the process of selecting the top 20, I had to exclude some exceptional entries. I had to exclude entries from some of my favorite underground artists. I had to delete all my previous preferences and then look at an artist just based on that 1-minute clip. तो अगर आप बाई चांस इस वीडियो में फीचर नहीं होते हैं, प्लीज डू नॉट बी डिसहार्टेंड. इट्स जस्ट 1 minute rap challenge in your career is a very small part, and if you look at it as a challenge and excel and improve on your skills, that would help you. यहाँ पे जीतने में तो टी-शर्ट मिलनी है और थोड़ी बीट पैक मिलने हैं. That's it, buddy. Having said all of that, all the artists जो इस वीडियो में फीचर होने वाले हैं, I'm pretty sure कि at least 6 and 7 of these artists are going to be really big artists in the coming 4 or 5 years. But before we jump into the top 20 countdown, I have to give a huge, massive shout out to everyone who uploaded innovative entries. तो जब चैलेंज होता है, we all want to put our best foot forward. But there were a few guys जिन्होंने काफ़ी क्रिएटिव और इनोवेटिव एंट्रीज डाली, एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी ब्रेव थिंग टू डू एंड दैट डिजर्व्स अ शाउट आउट. जैसे वी हैड 2 एंट्रीज फ्रॉम ट्रैप मेटल जॉनरा. फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रैप मेटल जॉनरा इज अ वेरी डिफिकल्ट वन टू पुल ऑफ. उसमें काफ़ी ज़्यादा आपके गले पे स्ट्रेन लगता है. सेकेंडली, I don't think a lot of people are doing it right now in this country, so huge shout out to them. One more thing, जब मैंने उनके lyrics पर थोड़ा ध्यान दिया, one of these guys named Cheerfart, very popular in Delhi scene, was talking about the rituals that will be conducted after he's dead. Little creepy, but quite interesting. Also, I'm not an avid listener of metal music, so I do not understand nitty-gritties and technicalities of metal. So Fing really helped me judge and gauge these two artists compared to the already present artists in our top 20 countdown. Thank you, Fing, for helping me, and a huge shout out going out to Cheerfart and Adarsh for trying out something new. Then we had this rap duo trying comical rap, which was pretty well executed. They were really close to making it to the top 20, but video की end में हल्की सी गलती की वजह से they are not featured in the countdown. But great job anyways, guys. बस कर भाई, थक चुके हैं मेरे कान. मेरे पास एक राज था, चुना मैंने रास्ता. रास्ता का राज ना राज रहा, राज से खासता था, राज सब खास लगा, खास ना पास रहा. दुनिया जाल सा था, छोड़ो कल की बातें, अब आगे चल. रफ्तार वाले सड़क पैर रखो अटल. वॉच पाई ना, वर्जिन बॉयज असफल. पत्ते खेले ना, डेक मेरा हुआ शफ. For a change, this time around we had a lot of female entries. Mansi Deol was decent, Meenakshi's entry was good, Mona Lisa had some really nice flow to show off, Shreya was doing something different, she was performing character rap. My personal favorite though was this girl named Akanksha. I was up, it was late, I was sitting around, yeah, it was like 3 in the morning. I was thinking about me and how it would be if I kept up the diet I was going. I'm not lucky, I'm blessed, I couldn't be dead, I'm my own first made of a warning. I'm just trying to impress everybody I'm proud, cause I not work in the corner. I'm just doing my music and stuff, making moves, spreading love. Trying to get a couple bucks and stay in my zone so I won't be cuffs. A pretty decent entry, and Akanksha looks pretty comfortable rapping. Then there were people who tried rock rap. आजा तुझे दिखा दो कैसे खेलते हैं नाम मेरा. अच्छे खिलाड़ी यारा, खतरों से खेलता हूँ. गाने नहीं लिखे जितने नाम मेरे बन गए. था पहले बोलता नहीं, अब मैं ना झेलता हूँ, पेलता हूँ जो भी आया मेरे सामने. नशीले लफ्ज नशा बचानी है जाम में. This guy named Rohan combined 6 languages in 1 minute and pulled it off really well and effortlessly. Great job, Rohan, and also very nice name. एक मिनट, wait a minute, एक मिनट दी गल, I'm a win it. Rapper मा just तो कोही छैन, भूल भाल गोलपोटा कुर्ते छैन. मलयालतिले चिरी बुद्धि मुट्टा, I'm still killing it, अरे तिल्ले कुट्टा. चुनौती जे देती है रोहन ने, what's up मेरे भाई रोहन में. Bro this shit is different day, spontaneous job में भी चिंते नहीं. छह तरीका ले मानना सोच तू प्यार में संलू, मैं रैप में संजू. I chill and kill baby all day, brother way too easy like child's play. भाई अगर आपको छोटे बच्चों का रैप सुनना बहुत पसंद है, then you must check out this guy named D King. He's pretty young and he murders the beat. Just imagine 8-10 साल के बाद what kind of a beast would D King become. For now, just watch his entry.
ये हाथ से मैं लग रहा था हाथ से टूटे अल्फाज है आज मेरे और बात ये ना किसी महबूबा की बातें मासूका थी मेरी और मैं भी यहाँ सो चुकी कहाँ तो चुप आ गई खूब माली बातें जो टूटी थी चीजें जो टूटी थी याद न करता मैं बातें वो आज भी पर थोड़ी ना मैंने वो भूली थी. And then there was this guy who tried to fusion Indian classical music with hip-hop. There were some flaws in execution, but man, 110 marks for innovation and creativity, buddy. From here, if you can take it forward, that'll be a very interesting genre to look at. करते रखते दिल ये सख्त फिर ले आजा किसी भी वक्त मुक्त छंद करता तो फिर दिल मिलाते सबके हल्का गल्म करता कलम से दो बहते रक्त के वन्ने अभी व्यक्त करता मन की बात दमदार जैसी चंपी साचा बीट पे बार से करती नाच मारो एक अलग दे वहां भागा सांप देख बाज नजरों से ना बच पाए. Now let's go towards the main countdown and number 20th पे जो एंट्री है उसी से आपको स्टैंडर्ड्स का पता चल जाएगा 1 मिनट रैप चैलेंज सीजन 2 का. नंबर 20 पर है शॉन राय. चाय सी मीठी है तू खुदा की सबसे हसीन कलाकृति है तू सांझ की हवा सी तू क्यों रहा मैं डूब ख्यालों से मिटी ना तू मिली जो तू तो समझा कि कभी भी अब तक ना हुआ था ऐसा महसूस मेरी ही रूह का लगने लगी है मुझको एक प्यारा सा हिस्सा अब तू. Sean Rai has a really good and comfortable voice in rapping and also he has a pretty good aesthetic taste in music, so nice one man. ठंडे के तू जैसे हवा की माड़ी की चाय से मीठी है अपनी कहानी सी सा दिल जो बात में हूं तेरा ना पता ये चाहता क्या. Number 19 is a pretty special entry. This guy named Sniper made a hook out of 1 minute rap challenge season 2's tagline. The tagline was all you have is 1 day, 1 minute, and his hook is exactly that. I got 1 day and 1 minute. I know that I ain't gon' make it, but I tried it all to make it fit it. And I did it all today. Ain't kidding, working all day till I ain't winning. Man, I ain't playing, make it rain when I'm in flame. You know what I'm saying? Yeah. Giving up my life, now could've left. All I wanted was trust that you could've give. I just wanna be alive cause I can't forget. What's the use of dreams when I can't fulfill? I've taken a lot of bricks, now it's time to build. I've been talking on it, but it is time to steal. Why I'm feeling so cold when I'm still in it. Came from the gutter, no one to wish me well. The hook was catchy and verse had decent amount of flow switches. So great job, Sniper, and I do remember your name. Sipping and thinking the life that I'm living and trembling. I don't want cause it is reckoning and I'm just feeling it. Sick with the system and feeling so numb and my eyes be flickering. Mom always say that I'm born just different. Say I'm a king and I keep on repeating it, keep on repeating it, keep on repeating it. I got 1 day and 1 minute. I know that I ain't gon' make it, but I tried it all to make it fit it. And I did it all today. Ain't kidding, working all day till I ain't winning. Man, I ain't playing, make it rain when I'm in flame. You know what I'm saying? Hope you remember the name, bro. Number 18 पे है this entry by this guy named Sansu Pro. I hope I'm pronouncing his name right though. This particular entry is one of the best songs in the whole countdown. Look at my wrist, I let them shine. I thought that you would still be mine. We used to play this take it slide. Yeah, girl, you're wasting all my time. Girl, you're wasting all my A little more inclined towards hip hop, and this entry would have found itself a lot higher in the countdown. Off on my back, you like a damn. Now you are hitting like a cinch. Oh yeah, you're acting like a knife. Girl, you keep switching up the side. I'm saying all that. Placed on number 17th is the Chaos Clown, showing us how new school hip hop is done and how it's done right. तू टैक्सी तो आएगा मीटर करनी में स्वीट स्टफ डीएम्स में क्रीप तभी छोड़े तो सीन पर यहाँ पे न सीन कर सब तेरे स्क्रीन पर घर पे है भीड़ कम वहाँ पे है फ्री सब जेब में है ग्रीन स्टफ टेस्टी पर स्मेली जैसे चीज पफ्स डबल डीज जैसे लीन कप्स ऐसे ना तो टीज कर तू लेरी नीड सब. The vibe of the track was top notch. The hook had a nice ring to it. The voice sounded very comfortable performing the kind of rap that he's doing. Just the song looked a little empty. Add fillers and ad libs here and there, and I think this song would be good to go. That's my opinion though. गाड़ी में beams बंद फिर भी क्यों carry वो deeper. Don't dare you lie. She be playing cold, keep on messing with my head while I'm trying to put these numbers in the bed or not. Ain't playing games, I'm just focused on the physics cause I'm fucking with emotion, let's say I try. Single from a corner, I'm paranoid. Number 16 पे we have yet another R&B and hip hop fusion. है जीने की जो मिली ये वजह जज्बात मेरे बोले बेवजह
मेरा दम नहीं चलता मैं जी लूं तुझे ख्वाहिशों में लालची सी है तेरी रजा. If you have attempted this genre, then make sure your singing is on scale. That is the most crucial part if you're doing anything related to melody. जैसे हिप हॉप में फ्लो, लिरिक्स, केडेंसेस पे ध्यान दिया जाता है, वैसे अगर आप कुछ भी मेलोडी या सिंगिंग से रिलेटेड कर रहे हो, थोड़ा भी ऑफ स्केल होना is criminal. But Pawan here pulls it off really well. वो में मैंने ढूंढा तुझे कब नहीं, न मिलती तो सोचता कि रब नहीं, तो मिले मुझसे लगा के दिल बदलने ले जाना मंजूर है सजा. Now we've reached the top 15 spot, and if you're one of those guys जो technical pure hip hop पसंद करता है, and if you're waiting for someone to come and blow your mind with his rap and his skill, I think we have exactly that for you. Double J rapper, ladies and gentlemen. I can hit you with the automatic go. I can do it with any better than I wanna go harder than it go. You witness all the blood is spilling out of my body and you're right in front of yo. I'm gonna chip it naked to a million pieces and I'ma twist your shit and go. Now let me tell you why I'm thinking like this. Bye bye. The right accent, clarity in his word, flow बहुत तगड़ा था. The way he started the rap kind of proves why he's made it to the list and he's in the number 15 spot. Congrats, Double J the rapper. Great job. I pick up a scene, so live it to me, and then I got a horrible feel. I'm chopping your limbs, then to the blood dripping to find my peace. And I'll make a friend of the team that I ding 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 ding. Listen, I don't wanna hurt anybody. If you wanna get upon my leg, you dead son. Now let me slow it down a little bit because you're gonna understand what I'm referring. Now if you're a fan of rappers like Encore, ABJ and Sunny Khandurani, and by that I mean कि अगर आप poetry के fan हो in rap, then the next entry by this guy named Panadol is going to move you. लिल कभी हादसों से गुजरा है, आज तक उभरने में मिली नाकामी. स्कूल का पहला वो प्यार था, प्यारी से बोले या बोले ना दानी. अभी भी ताजा जख्म है ये दिल में, मैं छोड़ चुका स्कूल और पढ़ाई. देख लिया मतलबी दुनिया को जी के वो चाहती थी हो हैंडसम आदमी. थोड़ी तमन्ना तो जिंदा मुबारक हो अब तुझे तेरी वो आशिकी. चारों तरफ होता सौदा इमोशंस और अंतिम में लीड शराब की. मिलता सुकून अंधेरे में, नफरत है खुद से और मेरी परछाई की. जिस जगह टूटेंगी सांसें मैं टूटा हूँ तभी है इतनी गहराई भी. रहा क्या बाकी मिटने को, यूं तो सरहद पे मैं खुद का सिपाही हूँ. भाई अमेजिंग, नाइस जॉब पैनाडॉल, ग्रेट एंट्री, लव्ड इट. शिक्षा और पुस्तक के परे है आर्ट में, पेपर पे बहता वो स्याही हूँ. अपनी मगज पे है हावी तो खुद की बर्बादी का खुद ही गवाही दूं. रहा क्या बाकी फिर मिटने को, यूं तो मैं सरहद पे खुद का सिपाही हूँ. शीशों से नजरें में लेना मैं तन्हा हूँ, कमरों में ऐसी तन्हाई क्यों. On number 13th, we have this guy named Panther, a very special entry because he did something in 1 minute that a lot of big artists cannot do over the years. What he did was he could put out his sound and his persona out in just 1 minute long clip. A very difficult and complex thing to do. सोशल मीडिया पे वोक रैपर, देश चलाना इन्हें खुद ही थोड़े ब्रोक हैं बस. गो गेट अ लाइफ और ए माइक करते चोक के बट भटूरे छोले संग करूं मैं गोटे गच. A lot of people write a lot of good punchlines, but Panther is an example of how you should deliver your punchlines for maximum impact. Fantastic entry by this lad. Holy shit, सुन के बार्स बोले कांचीपुरम, बहुत हार्ड पर थी ना तेरी भाभी भी कम. मैंने सूंघ लिया मुझे तो बनागी हिरन, गांधीवाद के साथ थोड़ा गांधी भी कम. नहीं रोकना नहीं बोलने दो, तू चीज डिप संग लइयो शवर में दो. बांधन में ऊंची कोटी का यूजलेस गोट, ये तो कंजर्वेटिव रूल गेम बना यहाँ पे नॉर्वे क्यों. Number 12 features a very creative entry by this guy named Rohan, enacting a conversation between a filthy anchor and an aware reporter, and explaining everything wrong with our media nowadays. Joy, get that cleavage covered up. That is called primetime coverage. Sir, but what about the outage of power that has happened in our state due to the flood and the carnage that is left and has tarnished lives of at least 26 lakh? Do we not have an obligation to at least just talk about that? I don't think so. Let's pass on that. Assam has always gone through this, and everything that ain't our narrative just block out, put a pause on that. Awesome plan. Although I do not understand Malayalam, but the hook of this track was very catchy. Without me understanding even a word of it, I think it had a very nice ring to it, and I'll remember at least the tone of that. So good job there. Amitabh sadly has tested positive. I wanna know if he's breathing. I wanna know if he's eating. I wanna know if the virus wins and us he's leaving. Are we now like gossip feeding? Well, it has to be entertaining. This job, man, I'm just hating. Over I can lay, yeah, over I can lay, can't kill Number 11th पे है Saurav Uppal. If you do not remember him, he was featured in 1 Minute Rap Challenge Season 1's video in Just Missed segment. So definite improvements from there, buddy. Great job presenting a new school hip hop entry yet again on the countdown.
with sort of skill, this entry had a lot of structure to it. It had a nice and catchy cadence along with it and an overall decent vibe, and that's why it's placed at number 11 spot. अपना आराम चाहिए सबसे ऊपर सॉन्ग चाहिए बड़ा है ईगो तेरा पूछे सबको कौन चाहिए मैं बोलूं ज्यादा नहीं बस बड़ा बॉम्ब चाहिए जो फटे जोर से रैपर होने मौन चाहिए खुदा भी पूछे तुझे फेम या गेम चाहिए मैंने भी बोला भाई कौन आपका गेम सही है पर मुझे नेम चाहिए मेरा सबसे ऊपर इतना कि रैप के साथ ना मेरा मुंह पर. Moving up to the top 10 entries, number 10th पर है this guy named Pace. नाम में नहीं काम में लगे हैं मेरे ब्लू टिकट ट्रैक करो प्रोग्रेस हो मेरी जैसे फेट पिट सब पे सर्फर हूं जो खत्म ही ना हो रहा क्यों मैं इतना कड़ा कब लगाया मैंने सेट वेट. His voice is oozing confidence. You can feel that confidence in his voice. डाउनलोड्स में जाएगा चलेगा गाना लूप पे ले आया अपने बात जो हटे ना कभी डूब से बन जाना रैपर पहले जरा हल करो जुबान को मेरी जो बढ़ती सारी है दिन पे दिन ऑन रिपीट पे खैर ऐसी का खत्म से लोगों को है छापे मेरे बार फिर बोले ये मेरे खुद के हैं आपे मांग लेता दे देता ना मुफ्त में भी की तरह ट्रैक्स उतरे बिना किसी क्रेडिट के. Looking at this entry, I can predict that Pace has a good sense of technicality and musicality, and he combined both of it to come up with this entry, and we loved it. Hence the number 10 spot. सांप के लड़े रहते सबके रास्ते पे माइक पे तो हाफ तक आता इनको रोज रास्ते में रेडी बन के पास तेरे इनको पता खास था इनको लेकिन ना खास तुम मिले तो जिंदा काट दूं लाश को मार दूं मैं ना मिले किसी शैतान को भी सांस लेना भूल जाऊं याद दिला दो यार कोई. Boy oh boy, 9th पर बहुत ही ज़्यादा special entry है. I am a huge fan of original sounds, and this young lad placed at the number 9 spot has everything that an artist needs to have. Please welcome Create Music. You can wear the Louis and the Gucci. I'ma rock the black jeans and the black tee. I got a feeling you're trying to be somewhere you're not. Personality cannot be bought. I got the bars, but I think I'll be sober while you're sticking close to the pot. I smoke a lot of rappers, and 50% of my silk gon' be all that they got. This guy does not sound like any other Indian rapper. मैंने इसकी बाकी entries भी देखी, and that stuck to my head because he is unique and he has a very different flavor with it. Beware of the pen leak, my bar like a land peak. The level of Mount Everest, the level you can't be. Got people that want support in the end that you can't see. I'm high like Plan B, the wing with no brandy. And when did this man breathe? I'm rapping the damn cheap. To go to the rap team, the rapper that no one know, but they know that he finna blow cause he got the skill and the ethic is scary like banshees. Yeah. Along with that, he writes some sick bars and delivers it like a child's play. Really looking forward to what this kid does in coming years. I'm a headhunter, get the guillotine. Got a collection, but I got empty spots in between. Dopamine rush with adrenaline. Get excited with my food dancing right up in front of me. Get my platter, put the plates, time to eat. Do it every day, take a seat, it's routine. I've been getting bored cause all these rappers spitting verses worth a penny, maybe less. I don't ever click repeat. On the number 8 spot, we have arguably India's fastest rapper who claims to have broken Kid Shot's record in his latest track, Sonic Boom. Nihilistic, ladies and gentlemen. चल भाई पढ़वाता हूँ मैं तालियां टेस्ट का मतलब ना होती देनी गालियां देख कितने पार फाड़ता एक मिनट में जंग में घुसा तो कभी निकलूं ना खाली हाथ. This entry of his is not recorded, and yet you can see crystal clear enunciation and pronunciation of each and every word. Wordplay मेरा सिक करने देता हूँ मैं लिट पर होते नहीं वो hit. Oh shit, I don't know what the fuck you spit ना करता कभी quit cause मैंने गेम से करा commit. बीट पे तो रहता पूरा टाइम हाई ब्रो जो ना बात करते थे अब करे हाई ब्रो खैर फाड़ में जाने दो इन दो बोलों को they say they care about you, it's a lie bro. This entry had sick bars, it had clarity, it had good flow switches, and that makes me believe that Nihilistic is one of the most promising upcoming artists in Desi hip-hop. Hey listen, I'm lyrically strong. शब्दों से खेलूं पिंग पोंग बना King Kong. Hard work all day long. आँख बंद पावर इतनी मैं Kim Jong. Hey listen, I'm all night awake. I'm gonna break the stage. Somebody press the brake. I'm gonna give headaches. Stop right there. Look at your life, it's full of snakes. हाँ पीठ पीछे भाव भाव ना मैं करता. हक की बात है साले हक के लिए लड़ता. If you thought only Krishna can seamlessly flow from Hindi to English in his songs, then wait till you see Ayush Singh Baghel placed at the number 7 spot on this countdown. How many motherfuckers gonna be the best when they're biting on everybody and got him in a tank? Piranhas eating peanut butter, you know that it's sham. Cause I know that a brother gonna get you in the bag when he gets a taste of that placid gold that he chews on. Jewels on food supposed to be food on. But he put a duty moody kind of rant so this last is zooed on. Perfect accent, crazy flow, बहुत ही अच्छी delivery, and hence Ayush Singh Baghel deserved this 7th spot on the countdown. Well guess what bitch, you can call me Full stop ना लगे मेरी जुबान पे पूरा पैरा का दूं एक किलो मेरी सांस में पर बाद में अभी तो बने बात है थोड़ा फास्ट पर चले मेरे हाथ में जंग ना बनता अस्त्र पहने फंडा रक्त पहले तने मन पे ना माने मैंने कटे तने बने वारे मेरे सर पे तो बुरी टाइम ऑन है घंटा. Number 6 पे है yet another deceptive entry. This guy absolutely blew my mind. Placed on number 6 spot on this countdown is Eddie Dude, another young lad in this countdown.
वक्त भी सहमा हो जैसे और किस्मत उदास न मिले इनायत, निराशा ही हाथों में मेरे फिराही अंधेरों में खुद से शिकायत, तड़पती है रूह मुझसे कहती ठहर जाए वक्त भी बदलेगा शायद, मैं बेबस बेचारा सा पाता हूँ आंखों में नमी फिर भी है चाहत, करी कोशिशें हजार बार बार फिर भी क्यों गिना जाता हूँ मैं भेड़ियों में, पूछो खुद से सवाल बार बार क्यों पग बंदे पड़े मेरे बेड़ियों में. He had a pretty melodious hook and some really long sentence fragments in the rap section. He took a very brave decision by not recording, mixing and mastering this track because थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाता तो दिक्कत हो सकती थी. But man, he did pull it off and pulled it off really well, and that's why he's placed where he's placed in the countdown. देखूं आईने में खुद को और बोले परछाई मुझे तुझ में वो बात नहीं, जरिया ना कुछ तेरे पास अलावा मजबूरियों के तेरी औकात नहीं, ये जालिमों की दुनिया है चलना है कांटों पे और खुद ही संभलना, लगाना मरहम तुझे कोई ना सहारा, तेरी हाथों की लकीरों में भी कोई मुलाकात नहीं. Now I refrain from comparing season 1 to season 2, but if I have to draw a parallel, then Eddie Dude is to season 2 what Paradox was for season 1. So I really hope he excels and keeps his grind going. Great job, buddy. दिखे रास्ता ना कोई पास था ना कोई मेरे लिए खास था ना कोई, जब जब चलूं लेके सपनों को पूरा करने में मिली थी वफा ना घूमूं घड़ी घड़ी गेड़ियों में. Now we've reached the top 5 spot. Bhai, the real deal has just begun, and placed on the number 5th spot is this guy who had the most outstanding flow in the whole competition. His flow will make you feel like Umar Akmal because you will not be able to catch it. शाम अजीब काम संगीत से पाँव संजीर में दूर मंजिल है ऊपर वजीर है नीचे कीड़े एक लकीर पे चलते सीधे धूप है केवल छाव नहीं है सब सटीक है फायदा क्या माथा टेके काटे फेंके गए मंदिर में सूर मस्जिद में आधे सच में शून्य खोजे घूम के पर है किस्मत फूटी चलता झूठी जबकि सामना खुद ही से मैं रखा आईना आगे हके अपना कुछ जनता भूल गई. This guy Bitten Bar, who's placed number 5th, deserves a special shout out because इस बंदे की 3 entries made it to the top 150 की list जो मैंने बनाई थी, and all the 3 entries were in a different zone. Man, he's super talented and I really hope he excels too. Bhai, brilliant job at this entry, by the way. इल्यूजन से लिया मुदागा कानून है बातों में मीठा से कामों से सांपों की गुना दुखालातों में हाथों में खाली रूह मांगा खुदा से कुछ तो भूला उसे कहना था तू है उदास क्यों है गुलाम तू जी ले यूं ही फिर उछलना नहीं फालतू असलियत में नकली सब ये खोखला चलते जड़ में जड़ से बंद है सोचना कसमें वादे सच में बस है बोलना वश में नफ्स सब मुझे तू छोड़ना कर ये अंत चेहरा बुरा मौत का दो गज न मिले दे खुदा को दोष ना. Now number 4th पे जिस rapper की entry is my favorite rapper amongst all. I feel that he's absolutely ready and groomed as an artist. Placed at number 4th spot is this artist named Om for his track named Dushkarm. दुश्मन करे दुष्कर्म करूं मुखबंद जब जब चले मेरी कलम, मैं लड़का सही पर सही बात नहीं करता हूं बात मैं गलत, मैं अलग है फर्क बोलूं सब सच खड़ी बात लगे सब बल कर मैं हट कर चलूं पलटन से ही हरदम खुद करूं अपना काम ये सोचे मुझे खुद कर. This entry was good and obviously I have a lot of expectations from Om already. His diction is on point. He has a very unique flow and cadences. He has a good camera presence and also he's lyrically insane. Any hip-hop label who's watching this right now and is looking for a young lad in their team, man, this guy is your finished product right here. I know you don't care about my opinion, but it's my job to tell you so. पूरे पन्नों पे चले शाही काली काली करामात पे पर न सोच खाली प्रयास सब तेरे तार जारी रहेगी आस जारी है जब तक सांस जारी. सगी बोली लगे मुझे हार दे पर मामा की जीत मेरी किसी ने दी नदी पर हर बार हार से अपनी मिली मुझे सीख नहीं जिंदगी. कोई अनसुलझी पहेली सुलझा करके भी न सुलझे जैसे कोई विचित्र रहस्य जैसे बरमूडा त्रिभुज है. Number 3 पर है arguably the most technically skilled rapper of our country. I have not, and I repeat, I have not seen anyone rap this fast in India. Krishna from Mumbai is placed at number 3 spot and boy, he deserved it. हाथ का तलवा लेके गड्ढे में प्रतिभा रखना जटिल मुद्दे पे बोलने में उतरा पाने पे कब से कठिन वक्त में शीतल बन के जटिल डुकर के स्वाधीन मरण सटिक निशाना अगला चरण प्रण फरण मित्र मरण अचानक नागरिकों के बना तो सपला सफल कार्ड सब वन ऑफ द नोट बिल जी ऊपर द टॉप ऊपर दी का सब भेजोल तबना चाहते जनता करोश कभी ना कभी तो डलेगा विघ्न के लोग कभी चना गर्मी से बिगला से निकट मरो सच गिनना से कड़दा को से आजत गिनना ना स्वर्ग लोक ना मृत्यु लोक अस्तित्व पृथ्वी लोक गमंड मरोड़ कदम कठोर एकता की अमर जोत. It's not just pace. Along with the pace, he's talking sense. He is talking about the socio-political issues that he wants to address. And with that speed, bhai, what skill, man. वे तो सही पढ़कर वेद परमाणु में खेद इनको पढ़ते फिर भी करते आपस में रंग भेद भावनाओं का ही क्लेश दर्शाता बुरे सकेत दानव ताके इष्ट पट में आके काटे सारे पड़ इतने भीड़ में दिखते सारे एक समान फिर भी करते तू है ऊंची और तू है नीची जात नीतिवाद जैसे बढ़ रहा है जालिम जातिवाद उन वक्त घोड़ा उस पे खींचू में जैसे लगाम ये जुबान. The only reason why Krishna is not at the top of this countdown is because the latter end of the entry had Marathi in it and मेरे को मराठी उतनी समझ नहीं आती. But nonetheless, जितना भी मैंने समझा, जितना भी वो एंट्री का पार्ट हिंदी में था और जितना भी मैंने फ्लो सुना was enough for me to place him at the number 3 spot. Bhai, great job once again, Krishna.
सरकार बदलती है एक रात में, ना कैसे कैसे खेल खेले जनता के जज्बात से। इतना प्यारा मेरा देश बस थोड़े से ये लोग कट्टरवाद से ना बना दे इसे सीरिया में। Now number 2 पर एक ऐसा आर्टिस्ट that would give Bollywood composers a run for their money. Pop rap genre उन्होंने perform किया है and the melody used is according to me one of the best melodies I've heard in a long time. Plays that number 2 spot and the runner-up of 1 Minute Rap Challenge Season 2 is Like Miracle. मदहोशी में हूँ बस मैं और मैं यहाँ गुम खुद में रहूँ बदला बदला जहाँ। अब भूल गया यार मेरा जिसको चाहा वो दूर गया, ना बात करूं खाली याद करूं ना हाथ लगूं है गवा। Man, Like Miracle has a very nice story with 1 Minute Rap Challenge. Last time in the season 1 he missed out being featured in the top 15 slot because वो 1 घंटा late हो गया था in uploading his entry. But this time he was all geared up and what a way to come back and find your place in the countdown, man. वो कई भूल मुझे भूलने में हो आसानी, परवाना होती होगी तुझको जरा भी। कहा था मैंने जरा सा भी सोचूंगा नहीं, करा था वादा खुद से मैं रोकूंगा नहीं। I know गिले शिकवे जो ट्रैक है इसको बहुत तगड़ा पब्लिक रिस्पांस मिलने वाला है, very similar to what तू नशा got after season 1. ना मुझे होश मैं अब तक ना समझा, खाके चोट मैं अब तक ना संभला, जो रोज हर पल हो मरता वो दुश्मनी में भी अपना पन रखता। Now it's the right time to tell you guys कि भाई he plays that number 2 instead of number 1 because I could not compare this completely melodic entry to a pure hip hop entry जो आपको number 1 slot पे मिलने वाली है. He is as good as anyone else. I did not want to declare a joint winner, but for me, Like Miracle and the guy placed at the number 1 spot, both are winners. तो Like Miracle might not get all the gratifications that are lined up for the number 1 spot, but मेरी तरफ से artist नहीं art की एक t-shirt just for Like Miracle. That's from my side because bhai, this guy made some really good music. Now the number 1 spot, and before we talk about the number 1 spot and we find out कि भाई 1 Minute Rap Challenge Season 2 जीता कौन इतने धुरंधरों के सामने, let's talk about those entries that missed being on the countdown by just a whisker, थोड़ा सा इतना सा. Do not skip because इस एंट्री में भी बहुत धांसू एंट्री मिलने वाले, क्या पता आपको आपका फेवरेट आर्टिस्ट जस्ट मिस सेक्शन में मिल जाए, so do not miss. दिन भी वो जैसे काला रात हो गया, बस उसकी यादें ना वो साथ रह गया, छोटी सी जिंदगी में सबको जीना सिखाकर किया रशू और वो शांत हो गया। बैठ के जमीन पे है ख्वाब मेरे बादलों में, ऐंठ में जमीर मेरा चीखता गया गलों में, दैट इस तसीन नाम जोड़ो मेरा पागलों में, आर्ट में अफीम मेरे जैसे दोनों पाबलों में, चादरों से ढकते काम किए सिलवटें, ना घरों में रहने से तो इनका बिल घटे, दिल बटे आर्ट शून्य इनकी नील बटे, चूतिया तो महत्वपूर्ण इनका स्टिल कटे। नए हमलेस नए राइम स्कीम्स और मेलोडी से मैं पक्का चल जाऊंगा क्या, कोई गारंटी दे सकता है क्या इस बात का कि मैं ये पालूंगा सब, मेरा क्या गाना बनाना है परशे पे पैसे लगते हैं क्या अब, फिर क्यों होते नहीं गाने शेयर मेरे सपनों से मैं कुछ शेयर दूर। चलो आज तक का सीन क्या, हमसे भी ज्यादा बेहतरीन क्या, वो कहती ILY पर मुझे कभी ना यकीन आया। जो सोचा मैंने कल था वो सच मेरा आज है, जो आज मैं हूँ सोचता वो कल में ही राज है, अकेला था सफर में सब है कलेक्टिव, नाम लेवल पे और काम पहचान है, वर्ड्स मेरे स्क्रीन प्ले स्पिट करूँ हीट में, खुशी मेरे आंगन में चलो मेरे भाई लोग। Couple of minutes when I've been needed to head up on them and I'm in a zone to take on my name is a beginner, what I'm bigger the wall as I'm climbing the wall and the motherfuckers pressing the button and pissing the corner में जाना माना हूँ नहीं, but the hustle is on 24/7, the Maserati on the bed, boy I'm Dennis the Menace by एंड्रॉइड का चार्ज मिल गया मेरे को, स्टार्ट करते अपन। ना मैं भीड़ से अलग हर रोज भीड़ में हूँ पिस्ता, गम में हाथ जोड़ और सहा न जाए वापस जा, मैं कौन और क्या बनना चाहूँ दोनों का नहीं कोई रिश्ता, गुलाम मैं अतीत का खत्म हुआ ना किस्सा, गलियों में घूमू ना मैं लेता सीधा हाईवे, आजा ले बीफ करूँ तेरी लाल माइक के, अब ले तू सोच भाई कैसी मौत लेगा तू, 6 तक गिनूंगा सिचुएशन डाइस से, बात काट मेरी शुरू कर सर्कस खाट गाड़ मेरी झुक थोड़ा मुड़ के दुकान चाट तेरी साठ गाट करी कितनों से, भाव मिले नहीं तो हाथों हाथ मैंने हाथ लात करी, शब्द लकीर बने व्यूज पे कभी ना घाट बाद करी, हाथ जोड़ के मैं शेयर कराया। When they see me stacking notes, I crack a joke, so I'm better than a slapping host, I crack a moans, I kill him with a brag of flows, so amateur, they trying to make an answer flow, this brag new folk, I'm sicker than a coke, though, this eat is cold, I set them with a hatchet bones, I feed the crows, I hit them with the cash and nose, and apple so flat, then I have it crows, fucking albatross. आंखों के घेरे में गहरे हैं राज ये ठहरे, चेहरे पे पैरे न लहरे गहरे, सब साफ से दिख रहे, सहरे पर शहर न शहर में गैर, बगैर से बांट रहे कोई बैर
न केयर न ट्रुथ न डेयर, बस शांत रहे। मेरी यादों में तो सोई सोई है, मेरी डायरी की शायरी में तू बसी, मैंने देखी नारी काफी पर न तू कहीं, मेरा दिल हुआ दीवाना ढूंढता बहाना के ये तुझसे चुपके मिल सके कहीं। And finally, placed on the #1 spot, the winner of 1 Minute Rap Challenge Season 2 is Gosh Music. भाई congratulations. निशाने कभी चुके नहीं बेकार देखा तो मैं दिखाने वाला हूँ भी नहीं, हमारे हाथों से देखे नहीं है, बता तूने मुझे डर देना मुझे कभी नहीं है, कभी रुकते नहीं करते काम से मरे के फिर कभी चुके नहीं, हमारे कागज सुनता नहीं दुनिया की सारे लड़ते बस मैं करते हैं कले काम करूँ भर दे फंसा मैं कैसे करे मुझे खत्म आऊँ मार के वापस। The only thing bad about this entry was that it ruined the suspense of who the winner would be. Even YouTubers like Hit Human and Mango Boy DM'd me about Gosh and how they were absolutely sure कि भाई Gosh top में रहेगा, and he was at the top and he is the winner of Rap Challenge Season 2. पहले से करते मेरे चेहरे पे वो गहरे वो नहीं डरते खैरियत में कह रहे थे वो चले गए मुंह भर के पैर के नीचे फेलियर कुछ पूरे शहर में शहर बन के फिर देखो एरिया में घेर ले तेरे को या बटेरे मेरे पैरने को तेरे अफेयर नहीं में कुछ नहीं उसे हमें सर में पैर। The whole entry was dope, but bhai the best part was the flow switch after he says वो भाई so energetic कि एक पतली कलाइयों वाला बंदा भी 20 kg का डंबल उठा देगा ये गाना सुन के। भाई epic job Gosh. वो मेरे जैसे तेरे को मिले तो पहले कहते मैं को देख ली तेरी बेइज्जती हेक भी तेरी फेक दिखे इतनी मुझे बेइज्जती हेस्ती तेरी ऐसी चेती देखे देश भी फेक भी फले खेलनी फेम नहीं बने पेट भी मौका ना तुम्हें चौका ना कोना को मैं पहुंचा था कौन है यहाँ पे पहुंचा था मौत का घर खौफ तो छुपी नहीं सके मुझे कंटेंट को फले कोरोना सुन कोरोना शुरू अभी हम वो मैंने। So suspense is over. 1 Minute Rap Challenge Season 2 के winner है Gosh. He wins a gift hamper by Chashmish and an EP beat pack produced by 6x Beat. Bhai Gosh, if you're watching this, please keep an eye on your DMs because वहाँ पे आपसे थोड़ा जानकारी ली जाएगी ये सब आपको प्रदान करने के लिए, okay? And with that, 1 Minute Rap Challenge Season 2 comes to an end. 2 weeks of continuous listening and then sorting and then confusion has come to an end. 3,500 entries was not something we were expecting and was not something we ever wanted. So season 3 if it comes we'll see a lot of changes in the rule book ताकि हमारे लिए भी थोड़ा जज करना और थोड़ा सॉर्ट करना इजी हो जाए, तो be ready for that, be ready, ठीक है? Now do not go, if you have made it this far just stay here. If you're a viewer, meme page or a content creator, let's do what we did last time around because that really helped all the artists. If you do not know क्या किया था हमने last time, bhai you have to select 2 artists that you liked the most from this video. It could be anyone. It could be a guy placed at number 20th spot. It could be a guy who was innovative. It could be a guy who just missed being on the countdown. Yeah, it could be Gosh. Anyone. Just 2 artists and share their content on your Instagram or whichever platform you can. Just comment some nice things. Just engage with their content because आपके लिए वो छोटी बात होगी, but that will mean a lot to an artist and that will help you support them and it'll help them make more music like that for you. So बहुत ही cool ecosystem build हो जाएगा. This ecosystem will start off with your share. जितने भी वीडियोस का मैंने जिक्र किया इस वीडियो में सबकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको. Make sure you check them out and engage with their content. Now if you've made this far and if you're wondering कि यार किस क्राइटेरिया पे जज किए इतने डिफरेंट एंट्रीज को, it was very simple. First sorting was done based on the skill. तो अगर आप एक प्योर हिप हॉप एंट्री लेकर आए हैं तो आपकी लिरिकल एबिलिटीज, आपके फ्लो, आपके केडेंसेस के बेसिस पे आपको जज किया जाएगा. इफ यू हैव अ मेलोडिक एंट्री देन आप कितने सुर में हो, मतलब आप स्केल मेंटेन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, will determine if you're good or not. Also your melody should be good. It should have a nice ring to it जो मेरे को याद रह जाए थोड़े टाइम बाद because that's why melodies are for. And after I've sorted all these entries based on skill, I have a bunch of really skillful entries. So top 20 decide करने के लिए I look for original and unique sounds. And by sound I do not mean voice, I mean flavor. भाई एक बहुत ही distinct touch आपके गाने में आना चाहिए जो आपको बाकी रैपर्स से अलग करता है. That's how the top 20 were decided. So congratulations to all the winners. But more importantly, अगर आपकी एंट्री इस वीडियो में फीचर नहीं हुई थी तो do not be disheartened. ये एक बहुत ही छोटा फेज है. 1 minute rap challenge is going to be negligible in your long-term artistic goals. So make sure you work towards your skill. Take this as a competition. Take this as a challenge and be back next time. So finally the video is over. It was definitely, without any doubt, the toughest video I've made on this channel. Tougher than the See Them Out video as well. So if you like my content, then consider hitting that subscribe button. If you want to support this channel, you can buy my merch. Artist Nahi Art की जो limited edition merch है उसके बहुत ही कम pieces बाकी रह गए हैं.
तो वो भी चेकआउट कर लेना, लिंक इन डिस्क्रिप्शन. इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट थम्स अप, इफ नॉट देन डिसलाइक कर देना. यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, माई हैंडल इज @ROHANCARIAPPA. Until next time, it's me Rohan Cariappa signing off. ये है दिल्ली, यहाँ पे होगी जो भसड़, सुबह पार को मिलाश तेरी मिलनी. बनेगा ज्यादा तेज तो लगा दे 2 चपेड़, मेरे यार सारे फिल्दी. When you in my city, you better be in your line or your time's gon' get shitty. भाइयों की तरह रहेगा तो लेडी, वरना don't you ever fuck with me in Delhi.